Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, myself Professor Uday Bhokre and now I am welcoming you on your own YouTube channel Ekeeda. Hope you are watching my videos regularly, but if in case not, if you are watching my video first time, please subscribe to our channel Ekeeda and also press bell icon for your latest notifications on your course. Students, we are doing for CA Inter course accountancy subject topic redemption of debenture, question number 2. The following balances appeared in the books of company on December 31, 2000 X1. राइट है 31 दिसंबर X1 में आपको उन्होंने बैलेंसेस दिया हुआ है. 6% mortgage debentures of ₹100 each. Debenture redemption reserve for redemption of debenture they created 10,42,000. Already it is there. Investment 528,000 and 528,000. 4% government loan purchased at par. 5,60,000, 3.5% government papers purchased for ₹5,42,000. So if you take a total of this investment, let me check. ये investment का total बनता है 10,70,000. आइडियली ये फंड दैट इज रिजर्व और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सेम होता है, बट यहाँ पे नहीं है तो इग्नोर इट, बट इट इज अ टेक्निकल पार्ट. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू December 31, 2000 X1. तो डिबेंचर इंटरेस्ट अप टू दैट डेट पे हुआ है. ऑन February 28 द इन्वेस्टमेंट्स वेर सोल्ड एट ₹90 and 87 respectively. We have sold the investment, but we don't know at what price, X interest come interest. We are ignoring the interest. We will say that it must be the X interest price. Assumption है अपना कि ये मेरा X interest price है. सर इसका रीजन क्या ये X interest price है? बिकॉज अगर क्वेश्चन ने नहीं दिया तो एक थंब रूल है, आपका जो भी कोटेड प्राइस है वो X इंटरेस्ट है, और अगर इंटरेस्ट डेट दिया है तो ही हम लोग इंटरेस्ट कंसीडर कर सकते हैं. वी विल सी दैट इन डिटेल व्हेन वी सॉल्व. द डिबेंचर्स वेर पेड ऑफ at 101. On what day we have did that? February 28, 2000 X2. Investments were sold and respectively, and debentures were paid on that date with interest, with accrued interest. तो इंटरेस्ट के साथ ही देना है ना भाई. अपने डिबेंचर होल्डर्स अपने को इंटरेस्ट छोड़ेंगे क्या? They will not do that. Okay, so we need to pay interest for 2 months. We know that. राइट ऑफ द लेजर अकाउंट कंसर्न. तो लेजर अकाउंट कंसर्न कौन सा है? मेरे हिसाब से आप यहाँ पे पहले डिबेंचर अकाउंट बनाओगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाओगे, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ DRR अकाउंट बनाओगे, और बाकी का अकाउंट आई थिंक मेरे लिए नेग्लिजिबल है, वो अकाउंट हम लोग नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा. बाय द वे देखते आगे क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑल दिस अकाउंट वी विल प्रिपेयर एंड इट इज from 1st January X1 to 31st of December X2. So it is a small account what we will draw. So we will prepare for half page every account. One more thing students, we can see that right of the ledger account the debenture redemption reserve is non-cumulative. सर ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये वर्ड का मीनिंग ये होता है इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट री-इन्वेस्ट नहीं किया जाता. वापस बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट री इन्वेस्ट नहीं किया जाता. दैट मीन दैट इंटरेस्ट विल ट्रांसफर टू PL अकाउंट. सो टेक्निकली स्पीकिंग आई विल इग्नोर द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. I will ignore the interest on investment. That's it. Necessary ledger account we will prepare. So we will prepare the necessary ledger accounts. We are not preparing investment account separately. Even if you prepare separately, that doesn't matter. We are combining because question उस टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन है. Alternatively, I can even open investment account separately for each kind of investment. But we are learning the topic redemption of debenture and not investment. Okay, so we are just going to prepare the single account. Unless there is lot of complication, we will prepare it single account. Okay, thereafter we will see how much account we need and which account we can prepare. 31st December X1, their books were showing this balance. 6% mortgage debenture, 10,000 debentures of 100 each. So cannot I say it is the opening balance on January 1st, 2000 X2. So I am writing it. Debenture redemption reserve we are having for ₹10,42,000. So there is an opening balance in DRR account.
investment rupees 5,28,000, 4% debenture, 4% government loan purchase at par, and 5,60,000, 3.5% government paper purchase for rupees 5,42,000. सो वी आर हैविंग दोज इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग अलग अलग अकाउंट नहीं बना रहे बिकॉज यहाँ पे कोई ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं है, तो वी कैन मर्ज इन ओनली वन सिंगल अकाउंट. तो आई एम राइटिंग इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 4% गवर्नमेंट लोन 5,28,000 purchased at par. The face value of this is same, and rupees 3,60,000, 3.5% government paper purchase for rupees 5,42,000. Importantly, in investment account we write the cost of investment. उसका face value कुछ भी हो सकता है, face value could be different, but at what price we purchase that will appear in my account. Face value I have written only for our knowledge. Whenever we need to calculate the interest and all, we may need it, but otherwise our importance is only to the cost. कितने में मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाता है. So first paragraph we have recorded all opening balances. Second, interest on debenture had been paid up to December 31st, 2000 X1, fine. On February 28, investments were sold at 90 and 87 respectively and debentures were paid off at rupees 101 together with accrued interest. So here there is a clear indication that I need to prepare a debenture interest account, and on debenture interest I will pay up to 28th of February, that is Jan and February. That means for 2 months I will pay debenture interest. For that my entry will be debenture interest account debit to bank account. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी पेड डिबेंचर इंटरेस्ट. डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक. अल्टरनेटिवली मैं ऐसे भी कर सकता था, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक विल बी अ सेम इफेक्ट. कोई फर्क नहीं पड़ता है. फॉर इंटरेस्ट यू नीड नॉट टू प्रिपेयर डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डायरेक्टली पास करो टू बैंक अकाउंट. ओके, अभी ये तारीख को उन्होंने क्या किया, दे सोल्ड द इन्वेस्टमेंट एंड दे रिडीम द डिबेंचर. फॉर व्हाट प्राइस दे sold the investment that we need to see. On 20th February 2000 X2 the investment were sold at 90 and 87 respectively. बराबर है, तो आपका सेल प्राइस इन रिलेशन टू पार वैल्यू दिया हुआ है. तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डिराइव होगा. यहाँ पे कोई मल्टीपल इन्वेस्टमेंट नहीं है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन नहीं, तो क्वेश्चन एकदम इजी है आपके लिए. तो आपका जो भी सेल प्राइस है, जो भी सेल वैल्यू है, आई विल क्रेडिट टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट. इन शॉर्ट मेरा एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ओके, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख देता हूँ 4% government loan. At what price we sold? We sold 4% government loan investment at rupees 90. That means it is 90 per 100. So whenever if nothing is given, we'll assume unit value is always 90. So it is sold at 90 per 100. Face value इसका था 5,28,000. $475,200. तो आप ठीक से देख सकते हो, तो यहाँ पे लॉस हुआ है, दैट वी विल सी. वन मोर इन्वेस्टमेंट 3.5% गवर्नमेंट पेपर्स ऑल्सो सोल्ड. They were sold at what rate? Government paper must have been sold at rupees 87. $4,48,000. Okay, तो we have sold the investment. इन्वेस्टमेंट बेचा, पैसा आ गया. इधर का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो डीआरआर अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा. इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन डीआरआर अकाउंट. तो इसको क्लोज करके आपका जो भी लॉस हुआ है, इनफैक्ट यहाँ पे लॉस हुआ है, तो ये लॉस हम लोग कौन से अकाउंट में डेबिट करेंगे स्टूडेंट्स? वी विल डेबिट इट टू द डीआरआर अकाउंट.
So students, we are having a loss of 146,800. One important clarification, this rate we applied on the face value. ये रेट हमेशा फेस वैल्यू पे अप्लाई होता है, तो अगर आपने कहीं पे इसको देखा कि इट इज अप्लाइड ऑन 528,000 और इट इज अप्लाइड ऑन 542,000, इट इज लॉजिकली रॉन्ग. सो आई सजेस्ट कि यू प्लीज फॉलो व्हेनेवर दे गिव यू 90%, 87. सो दिस अमाउंट ऑफ लॉस वी आर डेबिटिंग टू DRR अकाउंट. So I have debited it to the DRR account. On February 28, 2000, investments were sold that we have done, and debentures were paid off at rupees 101. That means they are paid off at a premium. When debentures are paid off at a premium, my entry will be debenture account debit, premium on redemption account debit to debenture holder account. So here I want to introduce two more accounts, debenture holder account and premium on redemption of debenture account. So two accounts I am preparing, about 5 lines, not more than that. When I redeem the debenture, for the amount due, my entry will be debenture account debit, premium on redemption debit to debenture holder account credit. So I am firstly creating debenture holder account on 20th February 2000 X2. Student, they are saying debentures were redeemed at 101. So cannot I say it is redeemed at 1% premium? So 1% premium on 10 lakhs. Debentures amount was 10 lakhs. That means how much amount is payable to debenture holder? 10 lakh, 10,000. Okay. But let me give the second effect of this. Premium on redemption will be debited to premium on redemption account on 20th February. Amount due entry, once again repeating, debenture account debit, premium on redemption account debit to debenture holder. And when you make the payment, your entry will be debenture holder account debit to bank. So payment is made to the debenture holder account is also closed. Sir, premium on redemption will be written off against which account? It will be written off against DRR account, because DRR is a special reserve created only for the redemption purpose. So redemption ka profit loss will be taken to the DRR account first. We redeem the debenture, right, and premium we have transferred to DRR account. Now when you comes to DRR account, one thing is sure, amount equivalent to the redemption should transfer to your general reserve. ठीक है, तो इसके अंदर से 10 लाख का फेस वैल्यू जो आपने रिडीम किया है वो ट्रांसफर होना चाहिए जनरल रिजर्व अकाउंट में. सो वी आर ट्रांसफरिंग 10 लाख रुपीज टू जनरल रिजर्व अकाउंट. तो स्टूडेंट्स, ये जनरल रिजर्व में जाएगा. जनरल रिजर्व अकाउंट आई एम नॉट प्रिपेयरिंग, बिकॉज इवन इफ आई प्रिपेयर ओनली वन इफेक्ट विल कम एंड देन कैरी इट डाउन. सो नो नीड टू प्रिपेयर द अकाउंट. सो आई एम क्लोजिंग दिस अकाउंट. This amount which is shortfall in DRR account will be taken from P&L account. So by profit and loss account. The balance deficit in your DRR account will be taken from P&L account. So what we learned in this question, nothing more than that means how you redeem the debenture when you are having DRR account. That's what we have learned. Very basic level question, but then to this kind of questions you can expect in your exam. In exam, if big question on debenture redemption comes, that means it is going to be very difficult. So my suggestion would be up to this level it is manageable and you can solve this question. I hope I have completed my question and you have understood it. Still if you have any doubt, my suggestion would be firstly go through my video again. एक दो बार देख लो मेरा वीडियो. फिर भी कोई डाउट आया तो आई रिक्वेस्ट यू टू पुट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंडरफुली. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.